कह रहा है बेटा द डायग्राम शो द सर्कल विद सेंटर A passing through the point B. A second circle has center B and passing through point A. The tangent at B to the first circle intersect the second circle at C and D. जो ऊपर डायग्राम में सारी जो मेंशन है वो यहाँ पर इन्होंने बता दी। The coordinates of A -1 4 and the coordinates of B is 3 2. Find the equation of tangent CBD. कह रहे हैं इस टेंजेंट की इक्वेशन आपने निकालनी है, दिस टेंजेंट ओवर हियर CBD, इसकी इक्वेशन आपने निकालनी है। तो सर इसकी इक्वेशन निकालने के लिए we need to have a gradient and we need to have this point as well. तो B, इस टेंजेंट का एक पॉइंट B हमें पता है, that is already given. हमें इस टेंजेंट का ग्रेडियंट चाहिए। अब देखो बेटा आपके पास लेट्स से अभी सिर्फ ये सर्कल सपोज करेंगे ना आप, दिस सर्कल ओवर हियर, सो यू विल फाइंड आउट कि आपके पास this AB is the radius. So first I'm going to find out the radius. So first I'm going to find out the gradient of AB, which is y2 minus 7, 2 minus 4 upon x2 minus x1, 3 minus minus 1. See ना, ये दोनों पॉइंट्स ऊपर मेंशन थे, मैंने इनसे y2 minus 7 upon x2 minus x1 कर लिया। 2 minus 4 minus 2 हो गया, 3 minus minus 1 plus 1 हो गया, and it become 4. तो हमारे पास ये AB का ग्रेडियंट आ गया। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द टेंजेंट ग्रेडियंट, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और ये नेगेटिव में है तो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन y minus 7। तो देखो y1, ये B पॉइंट को x1 y1 कहेंगे, B पॉइंट को, क्योंकि D पॉइंट हमारे पास टेंजेंट का पॉइंट है। This B point over here is the point of the tangent. तो y1 की जगह देखो बेटा मैं 2 पुट कर रहा हूँ, m की जगह बेटा मैं 2 पुट कर रहा हूँ, x1 की जगह बेटा मैं 3 पुट कर रहा हूँ। What I'm going to do, I'm going to just two x minus y minus 4 equal to 0. This is the equation of the tangent जो कि मेरे पास निकल कर आ गई। Okay, moving on to the next part. Find the equation of the circle with center B. कह रहे हैं सर्कल की इक्वेशन का लगा दें जिसका सेंटर B है। So they need to find out the equation of this circle. इस सर्कल का सेंटर में पता है B point is the center of the circle. Center, we know the center is 3,2, which was the B point. ठीक है ना, हमें रेडियस मालूम करना है। तो the distance between AB is the radius. आप देख सकते हो AB over here is the radius. So A is -1 4. तो x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मैंने y2 minus y1 कर दिया, x2 minus x1 3 minus minus 1 प्लस 1, y2 minus y1 2 minus 4 का होल स्क्वायर। तो 3 plus 1 is 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 minus 4 is minus 2 का स्क्वायर is 4, and AB distance is going to be, this is the radius। बस यहाँ पर बेटा मैं पुट करूंगा x minus a, the B is the center of the circle, this B point is the center of the circle, तो a की वैल्यू 3 हो गई, होल स्क्वायर y minus b, b की वैल्यू बेटा 2 हो गई, √20 का स्क्वायर। ठीक है ना, फाइंड बाय कैलकुलेशन द x कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड D। अब देखो यहाँ पर सर्कल में ये C का x कोऑर्डिनेट और D का x कोऑर्डिनेट मालूम करना है।
अब बेसिकली आपके पास ये सी और डी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसके, दीज आर दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल, जिसकी इक्वेशन हमने निकाल ली है, एंड दिस लाइन टेंजेंट, और जो यहाँ पर टेंजेंट बना हुआ है. Okay, so since this circle and line, which is the tangent of this circle, this line DBD, they are both intersecting this line, and the circle is intersecting at points C and D. So in order to find out the C and D points, especially the x coordinate, right now, we are going to solve these two equations, the circle equation and the tangent equation. So I'm going to copy this tangent equation. So it is going to be 2x minus 4 is equals to y. I'm going to make y the subject here. This is equation number 1. I'm going to simultaneously solve with x minus 3 whole square plus y minus 2 whole square equals to 20, which is circle equation. So I'm going to put the value of y here, which is 2x minus 4. So it will become 2x minus 6 the whole square equals to 20. So it will become x square minus 6x plus 9. 2 to the 4, 6 4 the 24x plus 36 equals to 20. So it becomes 5x square minus x minus 24x minus 30x. 9 plus 36 minus 20. 9 plus 36 is going to be 45. 45 minus 20 is going to be 25. I'm going to take 5 common ताकि factorization करने में आसानी हो. So I got the equation x square minus 6x plus 5 is equal to 0. I'm going to factorize it. So I'm going to have minus 5x minus x plus 5 equal to 0. So become x common. I got x minus 5 minus 1 common. X minus 5 equal to 0. I'll get two values of x. These are the x coordinate 5 and 1. These are the x coordinate of C and D. ठीक है जी. This was the question on the past paper of the circle. By the way, this was winter 2020 paper 1-1, question number 9 here. Okay, this is question number 9 of winter 2020 paper 1-2, topic is circles. It says a circle has a center point B 5 1. The point A minus 1 minus 2 lies on the circle. Find equation of the circle. Quite easy. We know the center of the circle, which is B point. We just need to know the radius. So radius is the distance between the center and any point of the circle, which is A over here. So I'm going to take a distance formula here, x2 minus x1 whole square, y minus 1 minus 5 whole square minus 2 y2 minus y1 whole square minus 2 minus 1 whole square. So I got the radius, which is minus 6 minus the whole square is 36 minus the whole square is 9. The radius is under root 45. So you got the equation of the circle x minus a ka whole bracket square y minus b whole square equals to r square. Got the A point, the A, B is the center of the circle. This is the point A and B. So what I'm going to have is the value of A, which is 5. I'm going to have the value of B, which is 1. And I'm going to have the radius, which is root 45. It is going to be whole square then. This is the equation of the circle in part A. Okay, now the B part of this question, it says the point C is such that AC is the diameter of the circle, point D has the coordinate 516. अब देखो आपके पास A coordinate from the previous part और C coordinate हमें नहीं पता, but it makes a diameter of the circle. This circle has the center 5 1 from the previous part. हमने circle का center भी निकाला हुआ था. B was the center of the circle 5 1. अब D जो है ना वो circle पे point नहीं, एक extra point है जो कि 516 है.
एंड मैंने यहाँ पर डायग्राम में इस तरह स्केच करी है कि देखो आपके पास डी कोऑर्डिनेट जो है वो जस्ट राइट अबव दी सेंटर ऑफ दी सर्कल है, क्योंकि इसका भी एक्सपोनेंट 5 है, इसका भी एक्सपोनेंट 5 है। ये रफ स्केच मैंने इस तरह बना दिया ताकि काम करने में आसानी हो। अब देखो यहाँ पर सी कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता ना, व्हाट दे आर सेइंग, दे आर सेइंग शो दैट डीसी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, डीसी टेंजेंट टू द सर्कल है। अब मुझे अगर ये बात प्रूफ करनी है कि डीसी टेंजेंट टू द सर्कल है, सो वी हैव द प्रॉपर्टी कि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेडियस सेग, ये जो रेडियस है हमारे पास जिसको हम बी सी कह रहे हैं, ये बी वाज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बी सी जो रेडियस है हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ बीसी। तो देखो यहां पर मैं बीसी का ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा, सी कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही नहीं है, सो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी कोऑर्डिनेट। सी कोऑर्डिनेट में किस तरह मालूम करूंगा, आई हैव दिस लाइन जिसमें मेरे पास ए कोऑर्डिनेट है -1 2, आई गॉट द सी कोऑर्डिनेट व्हिच आई डोंट नो, एंड आई गॉट बी कोऑर्डिनेट which is 5 1, ठीक है ना। this one is -1 -2, now I'm going to ask myself, देखो ये थोड़ा सा जल्दी काम कर लेते हैं, -1 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करूं to get the midpoint x coordinate which is 5, so I'm going to add 6 over here, -1 plus 6 is 5, so I'm going to add 5 plus 6, it becomes 11, the c coordinate का exponent 11 आ गया। So what I'm going to add in y coordinate, -2 में क्या ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ये मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आया, तो -2 प्लस सी करूंगा 1 आएगा, 1 में बेटा मैंने प्लस सी करा, आई गॉट 4 हियर, तो सी कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 11,4। अब देखो मैं इधर ग्रेडियंट ऑफ बीसी डालूंगा, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ बीसी, y2 -7 4 -1 upon x1 is 7, 11 minus 5, 4 minus 1 3, 11 minus 5 is 6, gradient of BC is 1/2. Now I'm going to find out the gradient of CD. (16 minus 4 y2 minus 7 upon x2 minus x1, 5 minus 11, 16 minus 4 12 हो गया, 5 minus 11 minus 6 हो गया, so you got the answer -2 here। अब देखो क्या इन दोनों के ग्रेडियंट ऑफ BC एंड ग्रेडियंट ऑफ CD का प्रोडक्ट -1 के बराबर है, यस सर, 1/2 मतलब -2 इज इक्वल टू -1। अगर आपने ये बात प्रूफ कर दी, दिस मींस CD is tangent to circle, ठीक है ना, परपेंडिकुलर रिलेशनशिप शो करना था। इन द नेक्स्ट पार्ट दे आर सेइंग the other tangent from D to the circle touches the circle at E, find the coordinates of E। अब देखो D पर, I'm just copying now this diagram, अब D से एक और लाइन पास कर रही है जो कि सर्कल के साथ वापस से टेंजेंट बना रही है, बट E पॉइंट पे, लेट्स से ये हमारे पास टेंजेंट बना रही है, दिस पॉइंट जहां पर वो टेंजेंट बना रही है ये E पॉइंट है, यानी E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखा दें आप। So what I'm going to do, I'm going to find out कि देखो बेटा आपके पास यहां पर देखो दिस क्वेश्चन इज ऑफ ओनली 2 मार्क्स, तो ज्यादा वर्किंग करनी नहीं है इसमें। E इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, बेसिकली इज पॉइंट ऑफ दैट टेंजेंट इज टचिंग टू दिस सर्कल। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम DE की इक्वेशन निकालें, सर्कल की इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, बड़ी थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट प्रोसीजर, लेकिन 2 मार्क्स का सवाल है। देखो बेटा इफ आई एम गोइंग टू जॉइन दिस लाइन, देखिएगा आप, इफ आई एम गोइंग टू जॉइन दिस CD, ये आपके पास क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना।
ये जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 5 था, यहाँ पर भी 5 था, इससे हमें फायदा हासिल हो रहा है। हमें पता है कि ये लाइन एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन बनेगी। दिस इज गोइंग टू बी अ वर्टिकल लाइन, सही ना। तो डी बिल्कुल ऊपर होने की वजह से हमें फायदा ये हुआ कि हमारे पास देखो ये वर्टिकल लाइन बन रही है, और दिस सी डी इज गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल लाइन। सीई, दिस सीई इज गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि जब ये टेंजेंट्स बन रहे होते हैं ना, दोनों इक्वल टेंजेंट्स बन रहे होते हैं, तो बिल्कुल आमने सामने बन रहे होंगे बिल्कुल ये। तो अब देखो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, इसका y, तीनों का y कोऑर्डिनेट, ये देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ई का y कोऑर्डिनेट भी 4 ही होगा, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। वंस इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बेटा इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 4 ही होगा। पूरी लाइन पर y की वैल्यू 4 होगी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, और देखो ये लाइन हमारे पास, अगर मैं ये लाइन यहां पर बनाऊं, दिस लाइन ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कॉर्ड। ये लाइन जो है, ये इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। दिस लाइन, तो देखो आपके पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इधर का एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज गोइंग टू बी 5, और y कोऑर्डिनेट 4 ही होगा यहां पर। देखो इस पूरी लाइन पर y कोऑर्डिनेट 4 होगा, द एक्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 5, क्योंकि बेटा ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, इस पूरी वर्टिकल लाइन पे x की वैल्यू यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 होगी, यहां पर भी 5 होगी, यहां पर भी 5 होगी, यहां पर भी 5 होगी। तो आप देखो यहां पर ये मिड पॉइंट है इस कॉर्ड का, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है। तो बेटा अगर आपके पास सिर्फ इतना देख लो, 11 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कराऊं कि 5 आएगा, सर 11 माइनस 6 करेंगे 5 आएगा। तो 5 में माइनस 6 करें, इट इज गोइंग टू बी -1। तो बेटा आपके पास ई कोऑर्डिनेट, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है और आपके दिमाग में स्ट्रक्चर से ही बैठा हुआ है, तो ई कोऑर्डिनेट देखो सिर्फ 2 मार्क्स का -1 डायरेक्टली आ रहा है। वरना अदर वे राउंड क्या है, अदर वे राउंड ये बेटा आप डी ई का ग्रेडियंट निकालें, फिर डी ई की इक्वेशन निकालें, फिर उसको सर्कल के साथ साइमल्टेनियस सॉल्व करें, आपके पास बेटा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा। उसके लिए भी इन्होंने पूरी स्पेस दी हुई है। लेकिन देखो इस 2 मार्क्स को देखते हुए मैंने वो वाला सेकंड स्टेप नहीं करा। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 पे जाते हैं, मैं देखो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर लिख देता हूं कि यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ डी, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, तो आपके पास बेटा डी और ई, आपके पास बेटा ई कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा। पर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर सही से बैठा होगा, तो बेटा आपके पास ये काम डायरेक्टली 1 स्टेप में हो जाएगा। ये बात जो शुरू से मैं लेकर चल रहा था ना कि एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 5 16 है, तो बिल्कुल ये आपके सेंटर के ऊपर ही बनेगा। ये पॉइंट वर्टिकल लाइन बनेगी ये मुझे पहले ही बदल गया था। ये वर्टिकल लाइन, अगर ये वर्टिकल लाइन बन रही है और ये डी सी के साथ टेंजेंट बन रहा है, तो बेटा यहाँ पर भी डी ई जो टेंजेंट बनेगा वो एज इट इज बनेगा, और यहाँ पर बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनोगी, सी ई हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी, और कोई लाइन नहीं बन सकती। अगर ये वर्टिकल लाइन है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ठीक है ना। दिस वाज ऑप्शन नंबर 2। Okay, now we are doing question number 11, part A. It says summer winter 2020 paper 1-3. It says it has a circle with the equation x minus 8 whole bracket square plus y minus 4 whole square equals to 100. It has a center C over here. It says show that the point T minus 6, 6 is outside the circle. We have to show this point is outside the circle. So I'm going to show this. First, just let's make a rough sketch of this diagram of this circle. So let's have the circle. We have a circle x minus 8 whole bracket square plus y minus 4 whole bracket square equals to 100. The center of this circle is going to be 8 and 4 from the equation, and the radius is going to be 10 from the equation. So this point over here is 8, 4, which is the center C, and T, which is outside the circle. We have to show this point is out of the circle. This T is -6, 6. So I made a point
T over here, which is minus 6, 6. Because the x coordinate was negative. So I just made it on the left hand side of the circle, and the y coordinate was 6, which is just right up to the 4 y coordinate of the center. Y coordinate of the center 4 है तो थोड़ा सा ऊपर बनेगा ये हमारे पास इस point से. So T is minus 6, over here. We have to show this point outside the circle. What I'm going to do, I'm going to find out the distance between T and C. If this distance is greater than the radius, what is the radius over here? Radius is 10. If this distance is greater than radius, then this means that this point is outside the circle. So what I'm going to do, I'm going to find out the distance between these two points C and T. X2 minus x1 whole bracket square, 8 minus 6, 8 plus 6 whole bracket square, 4 minus 6 whole square. So it is going to be 8 plus 6, 14. 14 square is 196. 4 minus 6 minus 2 square is 4. You got the answer of CD distance over here, which is root 200. And obviously, root 200 is greater than D is, since D is greater than radius, root 200 is greater than 10. You all know this. Therefore, T is outside the circle. This was the proof. Okay, now what they are saying in the next part, they are saying two tangents from T and C from T. There are two tangents from T to the circle are drawn. Let's say this one is one of the tangent, this one is one of the tangent, right? They are drawn. Show that the angle between the tangent and CD is exactly 45 degree. This angle they are asking is 45 degree. I said, okay. So this point over here, either this angle or this angle. See now, कोई सा भी angle आप 45 degree proof कर रहे हैं. This line, this distance is 10 degree. Radius आपके पास 10 centimeter है. इसकी value 10 है. I don't know the unit, but 10 है हमारे पास. And this D is root 200. This D is root 200, which is the distance between C and T, जो हमने ऊपर भी निकाल लिया. So we got this right angle triangle here. So I'm going to use, this is the theta here. We need to find out this angle as 45. So we got this right angle triangle. I'm using sine theta is opposite. Opposite is 10. And hypotenuse is root 200. So I just put sine theta is equal to 10 upon root 200. Root 200 is going to be 2 root 10. And theta is going to be sine inverse. Sorry, not 2 root 10. It is going to be 10 root 2. 10 and 10 cancel. You got 1 upon 2. 1 upon root 2. Sine inverse 1 upon root 2 is going to be 45. So this angle over here is 45 degree. We have already proved this. Now, okay guys, this is question number part C of the same question. It says the two tangents touch the circle at A and B. So in the previously we were discussing, we have the circle over here. We have the point T outside the circle and it is making a tangent. So there are two tangents over here. So I've just got an exact diagram here. मैं exact diagram आप नहीं भी पता हो आपको, that's not an issue. Just to prove something, just to show you something, that's why I'm doing this. वरना तो आप properties अगर आपको mainly याद होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका काम आसान हो जाएगा. So these are the two tangents. See, these are the two tangents that is drawn over here. Properties कौन सी बतानी चाहिए? I'll show you that thing. देखो इन दोनों tangents का यहाँ पर, if I draw this radius over here, ठीक है ना? These are the two radius. We know this point is T over here. This point over here is T. इस डायग्राम में खास तौर पर बेटा मैंने ये क्यों एग्जैक्ट डायग्राम बनाई है आपको दिखा रहा हूं मैं. Just to prove you some points. देखो, first let's start. We have got this CD over here and we know this कि CD का टेंजेंट के साथ जो एंगल है
We have already proved this. This angle is 45 degree. We have proved this. It means this angle is also going to be 45 degree according to the property of the circle theorem, right? This one is 90 degree. This one is 90 degree. So if we consider this triangle over here, if you consider this triangle over here, BCD, this is a right angle triangle. Sum of the angle of triangle is 90 degree. Sum of the angle of triangle is 180 degree. So this over here is sum of the angle is 180 degree. 180 minus 90 is 90. 90 minus 45. This was 45. So this one is also going to be 45. And same over here, it is also going to be 45. So we know this. Okay, at the vertex over here of T, at the vertex over here C, we have this whole angle 90. This whole angle is 90. Okay, now let's just remove this and make an angle of 90 degree here. सही है ना, तो हम यहां पर एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री. दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री. Which of the quadrilateral you think has the vertices 90 degree? Sir, first one is rectangle and then we have square. Square and rectangle has 90 degree at the vertices. Right now it's look like a square. It could be a rectangle as well. क्योंकि exact diagram मैंने बनाई तो आप शायद बोल दें कि सर ये square होगा, but obviously आप पेपर में आपके पास exact diagram तो नहीं होगी ना. तो मैं property wise बात कर रहा हूं. The vertices has 90 degree. So which quadrilateral has the vertices 90 degree? It is rectangle or square. There are two reasons. Right? So now we have this. We know this vertices पे 90 degree बन रहा है. Now we have this CD line here. देखो, we have this CD line here. See, we need to find out the equation of the line AB. So I've got this line here, AB. I'm not telling you any property right now for the square. I'm saying this कि देखो ये T is an external point. This T is an external point. यहां से लाइन जॉइन हो रही है सेंटर ऑफ द सर्कल को, पास कर रही है सेंटर ऑफ द सर्कल से, and AB is the chord of the circle. तो बेटा ये TC लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, it will pass through the midpoint. It will be a midpoint. It will be a midpoint of AB. AB का midpoint होगा, अभी इतना मुझे बस चल गया. And then we also know this कि बेटा अगर वो सेंटर से पास कर रही है तो कॉर्ड के मिड पॉइंट से गुजर रही है तो बेटा 90 डिग्री का एंगल भी बना रही होगी. फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल थ्योरम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पास टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. यानी अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रही है तो यहां पर मिड पॉइंट और 90 डिग्री बन रहा होगा. So by using the property of circle theorem, this CD is perpendicular to AB. It is making angle of 90 degree here. तो बेटा अगर यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, this CD is making an angle of 90 degree with AB according to the property of circle theorem. तो बेटा इसका मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर लिखूंगा तो ये ज्यादा सही रहेगा, इसको मैं स्क्वायर मानूंगा तो ज्यादा सही रहेगा. क्यों? क्योंकि बेटा डायगोनल स्क्वायर के 90 डिग्री बनाते हैं, रेक्टेंगल डायगोनल्स 90 डिग्री नहीं बनाते. इफ अकॉर्डिंग टू द सर्कल थ्योरम्स यहां पर 90 डिग्री बन रहा है तो इट मींस कि ये डायगोनल्स हैं, या तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होंगे या स्क्वायर के डायगोनल्स होंगे. बेटा स्क्वायर के डायगोनल्स हमारे पास ये 90 डिग्री बनाते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल 90 डिग्री नहीं बनाते. दैट्स व्हाई आई एम नॉट पिकिंग अप रेक्टेंगल. मैं ACBT को मैं स्क्वायर सपोज कर रहा हूं, रेक्टेंगल सपोज नहीं कर रहा. ठीक है ना. और ये अब आप एग्जैक्ट डायग्राम देख रहे हैं तो आपको स्क्वायर भी लग रहा होगा. ये तो आई हैव प्रूव दिस कि ये स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल थ्योरम एंड देन प्रूविंग विद द मैचिंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर. अच्छा, अब मैं जाहिर सी बात है मुझे AB ट्रायंगल, AB साइड की इस AB over here, I need to find out the equation of this AB over here. ठीक है ना. So what I want to do, I want to have the gradient of this line. तो मैंने निकाला TC का ग्रेडियंट या CD कह लो, TC का ग्रेडियंट.
y2 minus y1, this CD point is 4 minus 6 upon 8 minus 6. So it is going to be minus 2 upon 14 minus 1 by 7. And the AB gradient is going to be negative reciprocal क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये 7 हो जाएगा. 90 डिग्री बन रहा था इनके दरमियान. सेकेंडली, जो TC का मिड पॉइंट होगा, अगेन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर में बेटा डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं. यू नो दिस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री. तो बेटा TC का जो मिड पॉइंट होगा वही AB का मिड पॉइंट होगा. तो TC का मिड पॉइंट it is going to be x1 plus x2 divided by 2 minus 6 plus 8 divided by 2 6 plus 4 divided by 2. So it is going to be minus 6 plus 8 is going to be 2 minus 2 divided by 2 1 and 6 plus 4 10 divided by 2 is going to be 5. So this point M is basically a common point of TC and AB as well. अब equation निकाल रहा हूं. I'm finding out the equation. इसको जरा मैं ऊपर लिख रहा हूं. So we got y minus y1. y1 x1 is going to be this point. And M x minus x1. So you got y minus 5, 7x minus 7. We'll get the equation of the line 7x y equal to 7x minus 2. इस फॉर्म में हमें जवाब देना था. This is the answer of this part. तो इसको विजुलाइज करना, प्रॉपर्टी याद रखना. That's a good question from the past paper. Find the exponent of a and b. कह रहे a और b के exponent निकाल के दिखाते हैं. तो what we are going to do, we are going to simultaneously solve this AB equation with the circle equation. Circle equation क्योंकि AB is a point intersection of A and B are the point intersection of this AB line and circle. तो circle की equation है बेटा हमारे पास x minus 8 y minus 4 equals to 100. So I'm going to simultaneously solve these equations. I'm going to put this equation y की जगह यहाँ पर 2x minus 4 put कर दूंगा. So it becomes x minus 8 square, तो ये जगह 7x minus 2 minus 4 whole square is equal to 100. I'm going to open the bracket. X minus 8 is a square minus 2ab plus b square. 7x minus 6. So it is going to be 49x square. 2 multiplied by 7 multiplied by 6. It is going to be minus 84x minus 6 square is plus 36. 6 square is plus 36 and this is going to be 100. इसको ना आप बस minus 2 minus 4 is minus 6 करके फिर आप ब्रैकेट ओपन कर लेगा. So it becomes 50x square. सही ना. Minus 16 minus 84 is going to be minus 100x. 64 plus 36 100 और 100 cancel. It is going to be 0. मैंने 50x कॉमन निकाला. I got x minus 2 equal to 0. Either 50x is equal to 0 or x minus 2 equal to 0. The value of x is going to be 0 and the value of x is going to be 2. Got the x coordinate. हमें ये निकालने थे, वैसे ज्यादा काम नहीं करना. So got the x coordinate of the A and B point. हमें नहीं पता कौन सा A है कौन सा B point. तो यहाँ पर तो खैर एग्जैक्टली पता भी चल रहा है. तो मेरी डायग्राम अगेन इसमें जो टेंजेंट बनाई है मैंने खुद से बनाया है. तो these tangents are not accurate, but x की वैल्यू देखो अभी भी यहाँ पर 2 आ रही है और x की वैल्यू यहाँ पर भी अभी 0 ही आ रही है. ठीक है ना. So this is how we are going to attempt this question. Very good question from the past paper. We'll see you in the next class now. Take care.